Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from scratch even if you do not have any programming background. In previous videos we have already covered the topics like C language history, C comparison with human language, character set, keywords, variables, constants, data types, format specifiers, input output functions with the printf scanfs, operators like arithmetic, bitwise, logical, relational, assignment operators, operator precedence, operator associativity, conditional statements, if else, nested if else, switch case, break statement, for loop, while loop, do while loop, nested loops, continue statement, arrays, in particular single dimension arrays, two dimension arrays. We worked with the matrices, we saw the multi-dimensional arrays. We also covered the strings, string operations, and some built-in functions which we regularly use with the strings, and how strings are different or maybe correlated with arrays. So if you want to revise or clear any of your these concepts, right, please go back to the channel, go to the playlist of C programming complete course and watch the respective videos to clear your doubts, to clear your concepts. Now, in today's video, we will cover the pointers in detail. So guys, if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel, as I will not be limiting this channel with C. It will also have Python, data structures with C, C++, Java, Shell, operating system, and engineering mathematics, 10th, 12th mathematics too. Okay, so do subscribe. Now let's look at what we have in today's video. In today's video, we will be covering pointers in detail and pointers with arrays. There are many things we do with the pointers, though, and those will be covered as and when we will be covering those topics, like function pointers with functions. So we will be covering that when we will cover the functions. Pointers with structures, pointers with unions, all these things will be covered as and when we will be covering those topics. One of the more thing is like also dynamic memory allocation. Okay, and then it will also list down the next session topics. What are we going to cover? Now, pointers in C are easy and fun to learn. Some C programming tasks are performed more easily with the pointers, and other tasks such as dynamic memory allocation, right? This cannot be performed without using pointers. So it becomes necessary to learn pointers to become a perfect C programmer. So let's start learning about pointers in simple and easy step. As you know, every variable has a memory location, right? Every variable has a memory location. In this case, x is a variable which has value 20 and has some memory location, and that memory location has address. So in this case, the address of x is what? 656734. Now, and we know that this address we can access using what? Ampersand operator. Okay, now what is pointer? Pointer is another variable. Remember, pointer is another variable which stores address of the variable. So now in this case, pointer is a variable, so it is storing 6567634, which is actually address of x. And since pointer is also a variable, it will also have some address. 6863332 is the address of pointer. Okay, so a pointer is a variable whose value is the address of another variable. That is means direct address of a memory location, not the actual value. Okay, so if you try to save or initialize pointer with the 20, then it will basically go somewhere else, and 20 is the memory location which is not basically accessible by the normal user. So these are the two ways you can basically declare it and use the pointers. So in this case, x is a variable of integer type which has 20 as a value, so int x is equal to 20. Now ptr is a pointer, so that's why we use a star. Star is used with the pointers only. So star ptr, what does this really mean? What does this really mean? Actually, ptr is a pointer
which is going to hold the address of integer. So in this case, pointer is a variable which will hold the address of integer. अगर x float होता था तो आप यहाँ पे क्या लिखते float star ptr. Why? Because ptr is going to store the address of float. char होता तो char star ptr, like that. And since ptr के अंदर we need to put the address of some other variable, right? We will just say ptr is equal to ampersand of x. Why ampersand? Ampersand से हमको उसका address मिलता है, address of x. This will be there. But if you do not use ampersand and if you try directly ptr is equal to x, so ये क्या करेगा 20 को copy करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, which is not correct, right? So this is wrong and this is correct. So and the other way you can just write it the simplest way. Initialize the define and initialize the value variable x and then int star ptr is equal to ampersand of x. Directly you can initialize, so you can club these two, right? Don't worry, we are going to now look at the things in practical. Okay. Yeah. So as a part of practical exercise, what are we going to cover in a pointers, right? What are pointers? How to use pointers? What is a null pointer and how to use it? Pointer arithmetic, array of pointers, and pointer to pointer. Okay. Now let's go back to the IDE to go through the practical. So let's first try to display the address of some variables, right? Let's say now I have int x and I have int y, but y is a type of array. This is array of 10 integers, right? And this is a single array, single integer. Now let's try to print the address of both, correct? Address of x. Address is generally we use %u as a format specifier to print the address of a variable. Why? Because address is always unsigned integer. Okay. You can also use %x अगर आपको hexadecimal value इसका print करना है, right? Now let's try to print the value of y, address of y. Okay, now what exactly does it give when we run it? See, so the addresses are like 6487580, 687 536, and then if you try to print the values, right? Now we will just try to print the values first. Values of x is what? D. No, but see, in array, maybe we can just try to initialize it with something, right? Let's say. Now, if we try to print the value of one array, the first value of y1, that is %t, and then this will be y1, correct? But we should not use ampersand. Why? Because we want actual values, not the addresses. We can also try to print the address using x, %x, that will give us in hexadecimal stuff. So when you run it, it will basically give you the addresses, right? And the value. See, so the value of the address in hexadecimal is 62FE1C, 62FTF0. So they always addresses look like this, maybe the some kind of 5 to 6 digit number, and the values are going to be the actual values at that location. Okay, now what are the pointers? Okay, so the pointer is a variable whose value is the address of another variable, that is the direct address of the memory location. Like any other variable or constant, you must declare the pointer
before using it to store any variable's address. The general form of, so basically general form of the pointer is like this: type, then star, var name. What exactly this means? So var name is going to be a pointer. Why? Because this star, right? So how to read it? Var name is a pointer of type this. Okay. So type is a pointer based type. It must be valid C data type, and var name is basically name of the pointer variable. The asterisk, इसे बोलते हैं asterisk. The asterisk used to declare a pointer. It is basically the same asterisk what we use for the multiplication. Okay. However, in this statement, asterisk is being used to designate a variable as a pointer. So let's take a look at some of the valid pointer declarations. Okay. Now, if I say int star a, what exactly this means? This means pointer to an integer. Okay. And if I just say float x, float star x, what does this mean? This is a pointer to float. Similarly, if I say here char, this will be pointer to char. If I say double, it will be pointer to double, and so on. If I say some structure, so it will be pointer to structure. Okay. So basically the actual data type of a value of all pointers, whether integer, float, character, or otherwise, is the same, a long hexadecimal number that represents a memory address. The only difference between pointers of different data types is that the data type of a variable or constant that a variable points to. So इसका मतलब what exactly it is, right? A का जो data type है, see now data type of a pointer is always unsigned integer, remember. Okay, and data type of, let's say now when I say pointer, right, in this case I'm talking about a, or let's say if I say, so let's maybe try this float star ptr. अब इसका मतलब क्या हुआ? So there are two things, one is a ptr and one is what? Star ptr. See ptr का जो डेटा टाइप है, ptr का डेटा टाइप रहेगा अनसाइंड इंटीजर ऑलवेज. आप this will going to store the address of some float, and then star ptr जो रहेगा that will be actual float value. करेक्ट, पॉइंटर के अंदर फ्लोट का डेटा एड्रेस रहेगा, लेकिन स्टार पीटीआर will be the actual float value. So this is going to be a data type of a variable whose address ptr holds. Okay, remember. So agar if if someone asks you what is the data type of the pointer, pointer का data type हमेशा क्या होता है? Unsigned integer होता है. And then स्टार पीटीआर, उसके अंदर का जो वैल्यू है, स्टार पीटीआर मतलब पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे का जो वैल्यू है, that has a data type of a variable which whose address that pointer holds. Okay. Now how to basically use the pointers? Okay. Now to use the pointers, let's take an example here. So int var is, let's say, 20. So this is your actual variable. Okay. So var is the integer which holds 20 as a value. Then int star ptr. Now this means ptr is a pointer to integer type variable. That means ptr will hold the address of
integer type variable. Okay. Now, if I want ptr to point to var, how would I do that? So I will just say ptr is equal to and percent of var. What did I do? Stored value of var. Is it value of var? No. Stored address of. Okay. Address of var into ptr. So अभी ptr के अंदर var का address चला गया. Now let's try to print it. Printf address of var. Address of var अगर हमको print करना है, let's say %x हम use करते हैं address print करने के लिए. So this will be address of var. Now let's try to print the address of ptr. Not address of ptr, but the value of ptr will print. Okay. Value of ptr. See, I'm not saying value of star ptr. I'm saying value of ptr. So value of ptr. तो यहाँ पे क्या होगा? Since ptr is a variable, ptr के अंदर var का address रहेगा. So var का जो भी address रहेगा, that will be in ptr. But if you want the actual value of ptr जहाँ पे point कर रहा है, then you will have to use star ptr. Let's now look at what exactly does it give the same thing. Okay, when we run it, it will basically give you this. See, so address of var is what? 6 to fe14 and value of ptr के अंदर क्या है? 6 to fe14. Correct. So if you simply print star ptr, correct? If you just simply print, let's say star ptr, value of star ptr now. Okay, see. So value of star ptr will be what? Integer. So this should be what? Star ptr. And then instead of address, let's try to print the value of var. When you print the value of var, so var के अंदर यहाँ पे क्या है अभी? That is 20. And then star ptr भी क्या करेगा? 20. So अगर ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो वी नीड टू यूज स्टार. स्टार इज गोइंग टू डी रेफरेंस. ओके. सो अभी यहाँ पे जो है एड्रेस ऑफ, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी बिकॉज एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड पीटीआर के अंदर सेम वैल्यूज है. एंड वेर एंड स्टार पीटीआर इज गोइंग टू सेम. स्टार पीटीआर का मतलब होता है कि भाई पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करो. ओके. सो when we run it, it will basically give like this. See. So first address of var 6 to fe14, ptr के अंदर एड्रेस है, so 6 to fe14. Then we got the value of var. स्टार ptr का मतलब क्या है कि ptr के अंदर ये वाली वैल्यू है 6 to fe14. उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू निकालो. उस एड्रेस पे जाने के बाद वो एड्रेस है var का, तो var के अंदर वैल्यू 20. दैट्स व्हाई स्टार ptr आएगा 20. राइट. जैसे मैंने बोला था कि पॉइंटर इज आल्सो वन ऑफ द वेरिएबल, राइट. सो अगर आपको पॉइंटर का एड्रेस निकालना है, सो पॉइंटर विल हैव डिफरेंट एड्रेस. लेट्स से एड्रेस ऑफ ptr. So you can just say ptr address. It will basically give you the different value. So when we run it, see, so pointer has a different address 6 to fe10. So how it is? It is pretty simple, right? So ptr है जिसका एड्रेस है something 6 to fe10. करेक्ट. इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया है 6 to fe14 जो इसका एड्रेस है, किसका? var का. So var has a value 20, but the address of var is 6 to fe14. Okay. So ptr matlab this, but star ptr matlab this. Remember? Okay. Let's go to the next topic. So what if you do not initialize the pointer?
right? Now let's say maybe I'll just remove all this thing. Okay. Now in this case, I'm not initializing PTR with anything, right? I'm trying to print, let's say, value of PTR. Now if I try to print the value of PTR, let's see what it gives. And then I'm also trying to print the value at star PTR, value of star PTR. And star PTR is what? Integer. So it should be what? %d. Now let's see. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पीटीआर में अब तो कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, पीटीआर हैज समथिंग एल्स, और हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि प्रिंट करने का. सो व्हाट इट विल गिव, राइट? सी, सो इट इज ट्राइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ पीटीआर एज व्हाट? जीरो. पीटीआर के अंदर जीरो है. फिर वो जीरोथ लोकेशन पे जाके वहां का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है, बट जीरोथ लोकेशन इज नॉट समथिंग विच यूजर इज अलाउड टू एक्सेस. सो इट्स डेंजरस. अगर आप पॉइंटर्स यूज कर रहे हो आपके प्रोग्राम में, और अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, then it's something is going to make you a problem. So there will be a trouble if you do not use it properly. So should basically initialize that with what? Null. Null मतलब क्या? कुछ भी नहीं. ptr के अंदर फिलहाल क्या है? कुछ भी नहीं है. So when you now try to print the value of ptr, right, it will basically give you 0. Okay. And then you can do some values, some maybe validation. See, you can just simply say star ptr is, so what it basically, right, where is the cursor? So if you say ptr is equal to null, agar ptr null hai, then assign ptr is equal to address of var. Correct? Agar ptr null nahi hai to mat assign karo. So now in this case, since it will find ptr as a null, what it will do, it will go inside if condition. ptr में var का एड्रेस असाइन हो जाएगा. दैट मीन स्टार ptr का वैल्यू क्या रहेगा? 20. सो व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट बोथ थिंग्स, इट विल एक्चुअली गिव द वैल्यूज ऑफ var का एड्रेस एंड var का वैल्यू, राइट? सी, नाउ इट हैज गिवन द करेक्ट वैल्यूज. पॉइंटर, वैल्यू ऑफ पॉइंटर एंड वैल्यू ऑफ स्टार ptr. ये कब काम में आता है? राइट, लेट्स से नाउ यू हैव टू इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पे. int var2 is equal to -12. करेक्ट. और यहाँ पे समहाउ आपने नल की जगह पे लिख दिया var2. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे नल नहीं है, राइट? स्टार ptr is not equal to null. It has already address of what? var2. Then it will not go inside. It will basically have the var2 values. So that is 12, right? See. So that's how, if you want to check the conditions of ptr pointer, right, you should basically always try to check with the null. That is a null pointer. And these conditions you can check in multiple ways. ptr is equal to null, और if ptr मतलब अगर ptr एग्जिस्ट होता है तो नॉट इक्वल टू ptr मतलब ptr अगर नहीं है, if ptr is what? Null. This means what? ptr is null. This means ptr is null. And if we use this way, if ptr, this means p is not null. मतलब p में कुछ तो वैलिड वैल्यू है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू यूज इट, मे बी, राइट? अगर यहाँ पे नल है क्या? ptr is null. Let's try to initialize it with null then, right? First int star ptr is equal to null, right? Now when you use, अभी यहाँ पे ptr उसको null मिलेगा,
करेक्ट, मतलब पीटीआर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इट विल गो इनसाइड एंड देन इट विल हैव द var के वैल्यूज. When we run it, see, it gave us the values of var, that is 20, and address of var. But instead of this, when we write like this, so ptr now has some value. So in this case, this will not be correct. This will be false. So यहाँ पे जाएगा ही नहीं. यहाँ पे variable 2 के values रहेंगे. Okay. So when you go here, see it will have the var2 values. Okay. Now the another thing, if you just remove this ampersand from here, इसका मतलब क्या? ptr is not null. अगर ptr null नहीं है तो ये वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा. अभी ptr null है क्या? नहीं, ptr null है ही नहीं. ptr null नहीं है मतलब क्या? ptr में हमको var का एड्रेस डालना है. सो नाउ इट विल बेसिकली गिव अ var का एड्रेस and the 20 value. See, so this is how you can basically play with the pointers. See, you can write like this, so there is a space, right? This is also valid, this is also valid, this is also valid. Okay, so ऐसे नहीं कि मतलब स्टार को यहीं पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है या बीच में लिखना है. This all things are valid, remember. Now let's go with the pointer arithmetics. Now let's look at the pointer arithmetic. Okay, we will basically look at the arithmetic with pointers. Now we know what arithmetic operations we can perform. We can perform plus plus, we can perform minus minus, we can perform plus, we can perform minus, right? These things we can perform. So the same things we also can perform on the pointers. Now how to do that? Okay, so int, let's say there is one variable with value 20 and I'm having a pointer int star ptr which is going to hold the value of var, address of var, right? So ptr क्या है? ptr is a pointer to the integer type variable और ptr के अंदर variable var नाम का integer जो है उसका address है अभी. Now I'm just maybe trying to print value of ptr. Let's say value of ptr. So value of ptr will be address, so I'm using %u. So this is ptr, correct. Now what if I do ptr plus plus? जैसे मैं अगर var प्लस प्लस करता हूँ, राइट, इफ आई डू var प्लस प्लस, क्या हो जाएगा? var का वैल्यू विल बिकम 21. सो इन दिस केस ptr का वैल्यू क्या होगा फिर? राइट, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. So when we execute it, it gives us like this. See, so it says value of ptr is what? 6487572. ये var का एड्रेस था, लेकिन जब हमने ptr प्लस प्लस किया, so it gave 6487576. सी, इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 4 बाइट्स. 4 बाइट्स का डिफरेंस है. मतलब क्या कि पॉइंटर ये जो है 4 बाइट्स आगे के लोकेशन को चला गया. सो व्हाट डज दैट मीन? whenever we increment a pointer it goes to the next memory location. तो वैर जहां पे जिस पॉइंट मेमोरी लोकेशन पे है उसके आगे के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा. करेक्ट, 576. सो हम पॉइंटर प्लस प्लस कर सकते हैं, पॉइंटर माइनस माइनस भी कर सकते हैं अगर हमको आगे के मेमोरी लोकेशन पे जाना है या पीछे के मेमोरी लोकेशन पे जाना है. सो लेट्स मे बी ट्राई टू जस्ट डू अ प्लस प्लस, राइट, 3-4 times. So if we do 1 2 3 4, if I run it now, what does it give? It will move by 4 locations. See, 572 576 580 584 588, 4 लोकेशन से वो आगे बढ़ रहा है, राइट. बट अगर यही मैं यहाँ पे इंट की जगह पे ले लेता हूँ कैर वैर, इसमें अगर एक कैरेक्टर रख देता हूँ, सिंस पीटीआर के अंदर वैर का मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, राइट, इट शुड बी व्हाट? कैरेक्टर टाइप इन pointer. If I try to execute it, it will give me the error. It says
कैनॉट कन्वर्ट कैर स्टार टू इंट स्टार, बराबर। वाई? क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट शुड बी व्हाट, कैर स्टार। सो अगर अभी हम ट्राई करेंगे प्रिंट करने का, सो सी अभी पीटीआर का वैल्यू एक एक बाइट से बढ़ रहा है, 5 6 7 8 9। तब 4 बाइट से बढ़ रहा था, अभी ये 1 बाइट से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर का जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक एक बाइट का मेमोरी लोकेशन रहता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली मूविंग बाय वन बाइट, रिमेंबर। ओके, सो डिपेंड्स ऑन पॉइंटर आगे कितनी लोकेशन पे बढ़ेगा या फिर पीछे कितने लोकेशन पे आएगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंटर किस टाइप का है। ओके, since this is a pointer which is going to hold an address of a character data type, this pointer will either increase by a 1 byte or decrease by 1 byte. Now let's say if we just try to minus it, right? 2 minus and then again 2 plus. So what will it should do, right? It will basically go back. See, माइनस किया हम लोगों ने, 5 से 4 पे चला गया, 5 7 4 5 7 3, again we did a plus, 5 7 4 5 7 5. So that's how you can basically perform the plus plus and minus minus operations. Abhi, now how you can perform plus and minus? अभी देखो, प्लस और माइनस के लिए हमारे पास दो पॉइंटर होनी चाहिए, दो वेरिएबल होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये वाला एक वेरिएबल ले लिया, let's say let's try to use it integers, right, rather. So int var1 is equal to 20, int var2 is equal to 21, int star p, right, जिसके अंदर var1 का एड्रेस रहेगा, how this v becomes capital, and then int star q, जिसके अंदर var2 का एड्रेस रहेगा। सो सी, ये जो int star p है, जस्ट समझने के लिए हम इसको ऊपर मूव कर देते हैं। ओके, सो देयर आर टू pointers now, one variable, one pointing to one variable, one pointer which holds the address of var1. Q is a pointer which is basically pointing to the variable var2. Now let's try to do something like this, addition. How will you do that? Printf, right, var1 plus var2 is equal to what, %d, let's say. So I can simply do var1 plus var2, correct? Now if I want to do a subtraction, I can easily do subtraction like this too, right? var1 से var2 में subtract भी कर सकता हूँ। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो it will simply give me, okay, see now what the error we have made. This should not be a asterisk, this should be and %. Why? Because we are going to store the address inside the pointer, right? So see, 20 plus 21 41, 20 minus 21, that is -1. Okay, now can we do then like this? Now let me just copy it and we'll try to do it something with the pointers now, right, with pointers. Now let's say ptr p plus q, right, हमारे पास p and q variables है ना, तो p and minus q, so ये होना चाहिए p, ये होना चाहिए q, ये होना चाहिए q and ये होना चाहिए p। देखो अभी यहाँ पे हमने एक गलती की है, लेकिन वो क्या गलती की है इसको रन करके देखते हैं, राइट। When we run it, say it says some error on line number 17. Line number 17 पे what is the issue? Int star invalid operands of type int star and int star with binary operator. तो आप p और q का एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एड्रेसेस है। अगर लेट्स से एक एड्रेस पॉइंट कर रहा है आपका 68,000 और दूसरा पॉइंट कर रहा है 68,500, ऐसे
दोनों का एडिशन करोगे आप तो 68 प्लस 68 कितना हो गया 1,20,000 वन या समवेयर राइट मोर देन 1,20,000 वो एड्रेस वैलिड रहेगा क्या इट इज नॉट राइट इट मे नॉट बी so it is not a good practice to perform addition or subtraction on directly the pointers right अब पॉइंटर जहां जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उनका वैल्यू लो आप right so these plus and minus are not directly allowed on the pointers so you should basically do like this स्टार p प्लस स्टार q इसका मतलब क्या कि p जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का वैल्यू दैट इज 20 q जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का एड्रेस दैट इज 21 और उसका प्लस करो देन सिमिलरली स्टार q स्टार माइनस 1 सो ये भी हमको सेम वैल्यूज देगा ओके नाउ व्हेन यू रन दिस it will basically give you the same values same answer so this is how you can perform the plus plus minus minus and all okay you can also perform then multiplication as well here जो हम normal सब कुछ जो करते हैं right you can perform divide too right when you divide see so it basically gives like this यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस चेंज नहीं किया है बट इट इज स्टार मल्टीप्लीकेशन 20 into 21 that is 420 and 20 divided by 21 that gives us 0 as a quotient okay so that's how you can deal with the arithmetics with the pointers okay let's move to the next one so let's look at array to pointer where this arithmetic and so this plus plus and minus minus is generally used so we will declare one array okay let's say uh, what array we should use let's say int roll numbers right now we will have the roll numbers array like this let's say we have 10 roll numbers or maybe like yeah 34 12 45 21 78 68 roll numbers but those are not sorted nahi hai 3 3 6 and 7 right 56 and maybe 22 now you can have a pointer which will basically point to the array now yes what does this really mean this means ptr is a pointer which is pointing to roll numbers so roll numbers this will basically so ptr will have address of first element that is zeroth index element का address ptr में रहेगा and then when you do ptr plus plus it will go to the next one when you do ptr plus plus when it will again go to here when you do ptr plus plus it will go here like that now how to print it right let's say I is equal to 0 I is less than how many values we have 3 3 6 and 3 9 so I is less than 9 I plus plus okay now printf roll numbers %d is equal to %d right so I and roll numbers I'm not using pointer 8 to print it I'm just simply using a roll numbers array right the one which we studied already ये जो हम लोगों ने already study किया है ये use करो यहाँ पे एक see here we are using I but we haven't declared it so we should basically declare that I correct so ये क्या करेगा it will basically just go from 0 to 9 ये पूरा का पूरा traverse करेगा and then यहाँ पे it will print rolls 0 zeroth element that is rolls 1 first element so ये पूरा का पूरा इस तरह से add print होगा should we let's not have it on new line right so when you print it oh what does it give right it says you really cannot have a ptr pointing to the roll numbers why
See, roll number is already an array. So you need to just give like this. You read whenever this is an array, right? A string, you need to just give that name as is so that because it holds the address of zeroth element already. इसमें zeroth element का address already होता है. Remember. Okay. So when you now try to run it, it will run it perfectly fine. See, this is how it is giving. Let me maybe print it in more proper way on new line so that you can see all the elements printed properly. See, so इस तरह से array print हुआ, roles 0, 21, 34, right? पूरा का पूरा up to 22. Now, how do I print it using PTR? Correct. Now I can just maybe use like this. Instead of this, I would simply say here, I can just simply say star PTR. Now it will give, see what it has given. 21, 21, 21, 21, 21. क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार पीटीआर कर रहे हैं. पीटीआर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? जीरोथ लोकेशन पे. जीरोथ लोकेशन मतलब जीरोथ इंडेक्स इज दिस 21. सो पीटीआर का वैल्यू 21 ही है. आपने आई इंक्रीमेंट तो कर दिया 9 बार, लेकिन पीटीआर कहाँ पे? पीटीआर वहीं पे रह रहा है, इसलिए इट इज गोइंग गिविंग यू ओनली 21, राइट? सो यू नीड टू बेसिकली राइट हियर प्लस प्लस पीटीआर. मतलब क्या? अभी पीटीआर को आगे बढ़ाओ, फिर पीटीआर इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट से आगे बढ़ेगा, और रोल नंबर के सभी इंटीजर्स है तो 34 21 के आगे 4 बाइट रहेगा, 12 34 के आगे 4 बाइट रहेगा, 45 12 बाइट्स के आगे 12 के आगे 4 बाइट्स रहेगा. तो जैसे ही सेकंड आई इज इक्वल टू 1 होगा, स्टार पीटीआर प्लस प्लस मतलब पीटीआर इसको पॉइंट करना लगेगा. सो 34 प्रिंट होगा, फिर 12 को पॉइंट करेगा. दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. Now see, it is giving you the correct values. So this is how you can access the pointers. You can work pointers with the arrays, right? You can also try to print it reverse. Let's say I is equal to 9, I is maybe greater than equal to 0. Shouldn't be 9, it should be 8, because there are 9 elements. Index starts with 0 and ends with n minus 1, and then we should not have plus plus because we are coming back, so it should be minus, right? And then it shouldn't really plus plus, right? So it should basically be minus. तो अभी पॉइंटर जो है, ओके, दैट्स समथिंग. नाउ अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने रोल नंबर्स का एक एरे है, ये पूरा है, करेक्ट. आई, ओके. पीटीआर में हमने रोल नंबर का एड्रेस दिया हुआ है. एड्रेस किसका है? ये इसका है, करेक्ट. दिस इज द एड्रेस. सो अभी 21 है, स्टार पीटीआर में वैल्यू क्या है? 21. तो अगर हम स्टार पीटीआर पीटीआर को माइनस माइनस करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? वापस जाएगा. सो इसके पीछे तो एलिमेंट है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा? सो दिस शुड बी टेकन केयर. तो यहाँ पे हमको एड्रेस देना होगा लास्ट एलिमेंट का, दैट इज 8th एलिमेंट का. सी अभी मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्यों यूज किया? क्योंकि मैं जब रोल नंबर एक्सेस कर रहा हूँ तो ये मैं पूरा का पूरा एरे एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर इसका एड्रेस देना है तो मुझे इस तरह से एक्सेस करना पड़ेगा उस एलिमेंट को, तो उस एलिमेंट का एड्रेस तो मुझे देना पड़ेगा. सो ओनली name of the array will give you the initial address, remember. And if you want address of any particular element inside that array, you should use subscript and then address of operator. अभी ptr इसको पॉइंट कर रहा है, तो स्टार ptr में है 22. जब पहली बार होगा तो 22 प्रिंट होगा, फिर वो माइनस होगा, माइनस मतलब यहाँ पे आएगा, 56 प्रिंट होगा, फिर 68 होगा, राइट? माइनस माइनस किया. सो व्हेन यू रन इट, it will basically give you the values in a reverse. See, 22, 56, 68, 78, 70, 21, 45, 12, 34, 21. So this is how you can basically work with the arrays. Okay. Now how to deal with the strings? So to deal with the strings, let's maybe try to have some strings defined, right? Now अगर आपको एक
नाम अगर किसी का स्टोर करना है, हाउ यू विल स्टोर नेम, राइट, एंड देन यू विल से एरे, लेट्स से अथर्व, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, बेसिकली नेम इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। सो अगर आपको नेम को एक्सेस करना है तो आप यू कैन जस्ट परसेंट एस से कर सकते हो, राइट, एंड देन सिंपली यूजिंग नेम। बट व्हाट इफ यू वांट टू हैव नेम एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो वो सिंपली आप इस तरह से कर सकते हो। व्हाट से, लेट्स से स्टार नेम्स, राइट। अभी एरे हम किससे लिखते हैं, वी बेसिकली ऑलवेज राइट एरे इनसाइड द curly braces, curly brackets, right? So Atharva, Sachin, Hridaya, Akash, Ali, right? Let's say now, so अभी क्या है कि names is basically pointer. Names क्या है, pointer है, pointer to this array. Okay? So अगर आपको first वाला access करना है, names 0 will give you Atharva, right? Names 2 will give you Hridaya, and so on. So this is how you basically work with the arrays of arrays of strings, right? That's how. So now how, so that's how we use the star pointers for this. Okay. The another way you can have it like this. Okay, you can have it like this as well, or you can remove one array and then have it like this. So now if you try to print this, now I need to have an integer I which is going to iterate over this. So for I is equal to 0, right? Then I is less than 5, I plus plus, and then when I try to printf name at %d is %s. So %d मतलब क्या, I इस लोकेशन पे या फिर I plus 1 पे, राइट, एट द लोकेशन I plus 1, 0 के लिए 1, मतलब दिस इज बेसिकली लॉजिकली फर्स्ट लोकेशन है, बट कंप्यूटर के लिए 0 होता है, तो हमारे लिए हम 1 प्रिंट करेंगे, राइट। देन इट विल बी व्हाट, नेम्स I, right, but you cannot have a star name because star name will not give you the correct answer. So in this case, you will basically get this. See, so name at 1 is Atharva, name at 2 is Sachin, name at 3 is Hridaya, name at 4 is Akash, name at 5 is Ali. So this is how you can basically work with the strings and then use pointer there. You can also remove this like this and then you can have it like this too, right? That will double dimension array in that case. Okay. Now let's look at the next part. So next is pointer to pointer. Okay, next is what? Pointer to pointer. Now we saw single pointer. Let's say int var करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर 20 वैल्यू है. Now when I say int star p, जहाँ पे var का एड्रेस है. What if now I want to store the value of जो p का एड्रेस है वो स्टोर करना है. See, so how basically it is, right? ये इस तरह से है. So p is basically pointing to var now. क्यों? क्योंकि p के अंदर var का एड्रेस. लेकिन मुझे और एक ऐसा बंदा चाहिए जो q p को पॉइंट करे, तो मैं किस तरह से लिखूं? So p is pointing to var, that's how it is, right? So if you want a pointer to pointer, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, अगर चाहिए तो आपको डबल स्टार यूज करना है. वो कैसे? इस तरह से, सी इंट स्टार स्टार q इज इक्वल टू व्हाट, एड्रेस ऑफ p. मतलब अभी क्या हो गया कि q ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, दो, so that is double time, right? So pointer to pointer, that's why star.
So Q is going to store the value of P, address of P, and then P basically stores the address of var. So how you basically print the values here? So printf value of var is what %d. तो आप डायरेक्टली इस var से प्रिंट कर सकते हो, या फिर सेम, let's say if you want to print it with आप स्टार p से भी कर सकते हो, and then you can basically have star q as well. So ये तीनों के तीनों आपको सेम वैल्यू देंगे 20, क्योंकि स्टार पी वैर का मतलब वैर के अंदर का वैल्यू, स्टार पी का मतलब पी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू, स्टार क्यू मतलब स्टार क्यू मतलब क्या है, क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू. So again 20, right? When I run this, it will basically give me the same 20 20 20. Okay, now let's look at the addresses maybe, right? So printf address of var का एड्रेस प्रिंट करते हैं, right? So this will be var का एड्रेस, right? printf वैल्यू ऑफ p के अंदर क्या वैल्यू है, राइट? सो p के अंदर वैल्यू क्या रहेगा, var का एड्रेस रहेगा, राइट? सी p के अंदर वैल्यू क्या है, var का एड्रेस. नाउ सेम थिंग, लेट्स सी हियर एड्रेस ऑफ p का एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ q के अंदर क्या वैल्यू है, राइट? एंड देन q का एड्रेस अलग ही रहेगा, सो द एड्रेस ऑफ q विल बी समथिंग डिफरेंट. सो एड्रेस ऑफ q, अगर आप इसको प्रिंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, सो दिस इज हाउ इट गिव्स. सी, सो सबसे पहले हमने 20 20 20 और आर गोइंग टू गिव द सेम आंसर्स, var स्टार p स्टार स्टार q. var का एड्रेस है 6487580, सो p के अंदर जो वैल्यू रहेगा सेम रहेगा, करेक्ट? एंड p का एड्रेस है 6487568, डिफरेंट है देखो, जो q के अंदर है, q का वैल्यू एंड q का एड्रेस कुछ अलग ही है, राइट? सो दैट्स हाउ. सो दिस इसे बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर. अगर आपको और एक पॉइंटर लेना है जो q को पॉइंट करेगा, r इज पॉइंटिंग टू q इज पॉइंटिंग टू p इज पॉइंटिंग टू var, तो आप कैसे करोगे? सो वी विल से int स्टार स्टार r इज इक्वल टू व्हाट, एड्रेस ऑफ q. इजी. और आपको जस्ट यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहोगे यूजिंग r, तो आपको किस तरह से प्रिंट करना है, इस तरह से. तो आपको ये चारों के चारों वैल्यू देगा var का ही. ओके, सिंपली r के अंदर q का एड्रेस रहेगा. सो स्टार 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 आर मतलब क्या, आर जिसे पॉइंट कर रहा है उस, वो जिसे पॉइंट कर रहा है, वो जिसे पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू. सो दिस विल बेसिकली गिव यू द सेम थिंग. ओके, 20. और फिर ऐसे स्टार स्टार का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी रख सकते हो. ओके, इट रियली डजंट मैटर. सो you need to have that kind of hierarchy here. Got it? That's how we have a pointer to pointer, pointer to pointer to pointer, pointer to pointer to pointer, or maybe multi-level pointers. Okay, so that's what actually we had it from the pointers. I hope now you have a good idea about the pointers, you know the concepts of pointers. There are a lot of things to do with the pointers which we'll be covering in upcoming sessions as and when we'll be covering those particular topics. Pointer to structures, जो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी में यूज होता है, ध्यान में रखिएगा. सो लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, ट्रीज, ग्राफ्स, ये पूरा का पूरा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड है. ओके, सो दैट विल सी. नाउ what are the topics which we will be covering the next? Pointers to with the functions, pointers with the structures and unions, ये भी हम cover करने वाले हैं. Pointers with file operations, right? What are the advantages of pointers? Pointers reduces the code and improves the performance of the code. Okay, it is used to retrieving strings, trees, etc. जैसे मैंने अभी बताया, right? List, linked lists, queues, stacks.
स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है, फंक्शन के साथ यूज होते हैं। ऑल्सो जनरली फंक्शन अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, बट फंक्शन में से अगर आप वैल्यू पास कर रहे हो तो वहां से एक विथ वेरिएबल यू कैन रिटर्न द सिंगल वैल्यू, बट विथ पॉइंटर्स यू कैन रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज. इट मेक यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी में आप कोई भी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो. ओके. ना हम पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? मेनली पॉइंटर्स होते हैं यूज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में. क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कितना मेमोरी हमको स्टोर करना है, हाँ, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए. अभी लेट्स से कि आपने रोल नंबर्स का एक आपको रोल नंबर्स का एक एरे डिफाइन करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अभी आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, राइट, कितने स्टूडेंट्स हैं. अभी 10 है, बाद में और एडमिशन हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, और एडमिशन हो जाएंगे तो मतलब 20 हो जाएंगे, और एडमिशन होने के बाद 22 हो जाएंगे. तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज, राइट. और अगर किसी ने एडमिशन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे टाइम पे आपको फिक्स पता नहीं होता है. अगर आपने एरे, जो रोल नंबर्स का एरे है, अगर 20 पर्टिकुलर साइज ऑलरेडी लग दी, राइट, इंट रोल नंबर 20, तो मेमोरी जब भी आप रन करोगे प्रोग्राम, ऑलरेडी 20 साइज का एरे वहां पे लिख देगा, लेकिन 20 के आगे नहीं ले पाएगा, राइट. अगर 20 के आगे अगर आपके पास क्लास में बच्चे आते हैं, एट दैट टाइम यू शुड बेसिकली हैव दैट, आपको आपके पास वे होना चाहिए कि आप उस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीज कर सके, या फिर आपको जब भी जो रिक्वायरमेंट आए उतना मेमोरी आप रन टाइम एलोकेट कर सके. उसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज होता है. दैट इज मैलॉक, कैलॉक एंड री अलॉक फंक्शंस होते हैं. ओके. नाउ वी यूज द पॉइंटर्स इन एरेज, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंटर्स इज अ की कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज. अगर आपको पॉइंटर्स आ रहा है तो मतलब अब यू कैन डील विद एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन सी. ओके. Pointers in C language are widely used in arrays, functions, and structures. And as I already said, right, it reduces the code and improves the performance. Okay. Now, in the next video, we'll be covering the structures in detail. First, structures and pointers, how to deal with the pointers with the structures too. Okay. So that's all I had it from this video. Guys, if you like the video, do share it with others as well so that others will get benefit of out of it. Please do not forget to like, subscribe, and share. I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.